So let me just tell you what are we going to do today. So we are going to discuss some of my favorite resources for web design. We'll figure out how do I collect. Let me shift my camera a little bit. I'll show you how I collect my inspiration on Notion, how I collect my visual design inspiration on Notion, and we'll have a live Q&A with the audience. So you can put your questions in the chat and we can have our live Q&A happening. We'll have discussions over all your interesting topics. I just want to make sure that I'm seeing the live on my phone as well, because I don't want to miss out on something important. So yeah, there's some lag. So when you put your questions in the chat, I would sort of take some time to answer them. But overall, it's going to be a nice scene. So we are going to discuss my favorite resources for web design. Web design is something that has made a lot of money, a lot of people. Like before product design, web design was the real thing. And even now, a lot of people are core web designers. A huge part of designing your website is obviously collecting inspiration. So I'm just going to show you some very cool websites that I've collected over the past 2 or 3 years that have really helped me collect inspiration. The first one is webdesign-inspiration.com. Now this website has some really, really cool features. The first one is that you have this editor's pick on the very top that allows you to quickly go through a very well-defined, fine-tuned list. You can also check out their blog that has some really interesting articles that can help you as a web designer in total. And no, this is not pre-recorded. This is happening through Zuddl Studio. It's a platform that we have recently launched. That is why I want to showcase the demo. So what you're seeing right now is live. There is no post-production, and I'm just using Zuddl Studio to show you how your live streams can look like. The second website is niceverynice.com. So this website is unbelievably powerful. So when you go to this website, you have component-wise curation. So if I go to blog, if I go to CTA, or if I go to e-commerce, it would pick e-commerce from all different websites altogether. So you're not taking inspiration from a website's perspective, but you're taking inspiration from a component's perspective, right? So if you have, say, if you're making a testimonial component, right? A testimonial component bana rahe ho, and you feel like my designs are not looking good, then you go to the testimonial part and then you see how multiple websites are designing the testimonial component, right? And मुझे अभी बीच लाइव सेशन में रियलाइज हुआ कि मैं जबरदस्ती इंग्लिश में बोल रहा हूँ. I forgot that हम अब हिंदी में आ गए. तो आगे आने वाले resources में I will talk in Hindi. But yes, Nishant, I will put all things in chat. मैं actually description में सारी links डालूंगा, so don't worry. So the third resource is godly.website. तो इस website के अंदर जो curation है ना, that is like a very modern vibe sort of a thing. Like that, there are some websites that look very sleek, very modern, very, very interesting. तो इस website पे भी जब आप जाते हो तो they have these tags, right? अभी आप tags देख सकते हो. There's minimal, there's large type, there's design, there's colorful. So their curation is very, very unique. Like you won't find this stuff very easily. आपको खुद से इन websites को ढूंढने में बहुत time लग जाएगा. So godly.website is another resource. Then we have pagecollective.com. जब आप page collective पे जाओगे तो top पे आपको app screens दिखेगा and landing pages दिखेगा. तो आप landing pages पे click करना. जैसे ही आप landing pages पे click करोगे, आपको उनके सारे references मिल जाएंगे. और इस website के अंदर ना बहुत interesting एक column है left पे. तो what? हाँ, this life is going to be posted. This life is going to stay on YouTube. So यही मेरा एम था. I wanted to show कि Zuddl Studio पे जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो कैसा आपका लाइव स्ट्रीम दिखता है. तो आप सबको लग रहा होगा कि ये एडिटेड है. इसमें से कुछ भी एडिटेड नहीं है. Can you imagine? And I'm changing all these slides as if कि मैं एक स्लाइड शो चेंज कर रहा हूँ. I will tell you about Zuddl Studio. Let's just cover all the resources first. तो लेफ्ट साइड पे अगर आप नोटिस करना है, यहाँ पे एक एलिमेंट्स का पैनल होगा एंड एक प्रोडक्ट कैटेगरीज का पैनल होगा. तो अगर आप एलिमेंट्स पे जाते हो तो अगेन इस पे आप कंपोनेंट वाइज इंस्पिरेशन ले सकते हो. नीचे आप कैटेगरी वाइज भी इंस्पिरेशन ले सकते हो. तो अगर आपको सिर्फ ई कॉमर्स का इंस्पिरेशन लेना है, सिर्फ एजुकेशन का इंस्पिरेशन लेना है, फाइनेंस का लेना है, इट इज वेरी इजी टू गेट प्रॉपर रेफरेंसेस वेरी इजीली. Then you have saslandingpage.com. Amazing examples, truly amazing examples.
इस वेबसाइट पे जाके इसमें कंपोनेंट वाइज तो है ही, बट व्हाट दे डू इज दे गिव यू लाइक अ फुल ओवरव्यू ऑफ द लैंडिंग पेज। तो आपको बहुत जल्दी स्क्रॉल करके आइडिया लग जाता है कि इस पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो सास लैंडिंग पेज इज समथिंग दैट इज गोना हेल्प यू इफ यू आर ओनली टारगेटिंग लाइक टॉप क्लास प्रीमियम SaaS products. Then we have landingfolio.com. This is again very premium resource. आपको यकीन नहीं होगा इन वेबसाइट्स को कलेक्ट करने में मुझे इतना टाइम लगा है, इतना ज्यादा टाइम लगा है। And I've picked them from multiple videos, right? Like I regularly follow other YouTubers वो अपने YouTube channel पे references डालते हैं। A very good friend of mine, Puneet Chawla, he is the one who posts about these resources. You should check out his channel as well. तो उसके YouTube channel से भी मैंने बहुत references लिए हैं। So thank you so much, Puneet, for sharing all these resources because you're one of those channels जहाँ पे मैं जाता हूँ to collect my resources. बट या लैंडिंग फोलियो के अंदर आई थिंक मुझे फिंगर इस तरफ करनी चाहिए। सो लैंडिंग फोलियो के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे भी यू हैव इंडस्ट्रीज एंड देन यू हैव पेजेस। तो जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, मेजरली एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं। देयर इज एन अबाउट पेज, देयर इज अ प्राइसिंग पेज। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम में आप देख सकते हो, आप इंडस्ट्री वाइज टारगेट कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपका पेजेस भी है। तो अगर आपको सिर्फ साइन अप पेज पे ध्यान देना है या आपको सिर्फ अपने नॉट फाउंड पेज पे ध्यान देना है, आप स्पेसिफिकली उस पेज की इंस्पिरेशन कलेक्ट कर सकते हो। Then we have landbook.com. Again, very interesting stuff. बहुत clean UI है, इनके पास भी same categories है। Now the interesting part here is that अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो और अगर आपने इन सारी resources को use कर लिया, trust me, आपका इतना टाइम बच जाएगा, इतना टाइम बच जाएगा, because you will have so many interesting references and so many examples. And you'll have to obviously design your stuff on Figma first, and Figma पे design करके then you will develop. But design stages में आपका बहुत ज़्यादा time बच सकता है। Then we have onepagelove.com. These are specially one page websites. जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ वेबसाइट बहुत complicated होती है, you have a lot of tabs on the top, राइट? तो आपको अलग अलग जगहों पे जाना होता है, बट कभी कभी कंपनी का इतना बड़ा बजट नहीं होता। कभी कभी कंपनी के लिए होता है कि हम बिल्कुल एक इनिशियल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे को एक सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए। तो उस केस में दिस वेबसाइट विल रियली हेल्प यू। मैं बार बार उधर रहता हूँ, दिस वेबसाइट इज गोना हेल्प यू बिकॉज इसमें सिंगल पेज डिजाइन है। एंड सिंगल पेज डिजाइन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक मल्टी पेज वेबसाइट की स्ट्रैटेजी से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको उस एक ही पेज पे अपना सारा मैटर, अपना सारा प्रोडक्ट डेमो, अपने फीचर सब कुछ एक जगह डालने होते हैं। सो द स्ट्रैटेजी बिकम्स वेरी डिफरेंट। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट जब भी आप फिग्मा में अपनी डिजाइन बनाओगे, प्लीज मेक इट ऑन 1280 by 720। एंड हाँ, मैं अपने कोर्स में भी बार बार ये बोलता ही रहता हूँ कि वेबसाइट बनाने से पहले आपकी एक तो ब्रांड आइडेंटिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो आप जिस भी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि उस स्टार्टअप ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी कंप्लीट करी हुई हो। ब्रांड आइडेंटिटी में आपके लोगो आते हैं, आपके कलर्स आते हैं, व्हाटएवर इट इज, एंड उस आइडेंटिटी गाइडलाइन से आप वेबसाइट बनाओगे। बट अगर आप डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो, सो डेस्कटॉप पे हमेशा सबसे छोटी स्क्रीन पे बनाना, 1280 पे ट्राई करना, विड्थ इसकी 1280 रखना, फिर 1440 पे टेस्ट करना, एंड देन 1920 पे टेस्ट करना। 1920 के बाद यू शुड नॉट स्ट्रेच आइटम्स, फिर उसको आप बीच में रखना, लेफ्ट एंड राइट पे अगर वाइट गैप रह भी जाता है, इट इज कंप्लीटली ओके। नाउ आई विल टेल यू हाउ आई टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशंस। तो जैसे मेरे पास ये बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक स्क्रीनशॉट्स, एंड मैक में एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, कमांड शिफ्ट 4 एंड उसके बाद कंट्रोल की होल्ड करके रखना। तो अगर आप कमांड शिफ्ट 4 करते हो, तो कमांड शिफ्ट 4 से आप एक स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट? जब आप वो स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है, और डेस्कटॉप बहुत क्लटर हो जाता है। तो उस क्लटरिंग को अवॉइड करने के लिए अगर आप कमांड शिफ्ट 4 को कंट्रोल की प्रेस करके स्क्रीनशॉट लोगे, तो वो आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाता है। फिर आप उसको अपने नोशन डायरेक्टरी में जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो। तो अभी जो आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये है मेरे वन ऑफ दोज नोशन पेजेस। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीपल कैटेगरीज बना देता हूँ। तो टॉप पे मेरा टेक्स्ट है, बॉक्स है, अवतार्स है, केस स्टडीज है। तो मुझे जो भी रेफरेंसेस मिलती है, मैं एक एक करके इनके अंदर डालता है। तो जब भी मेरा कोई डिजाइन प्रोजेक्ट आता है, आई कैन इजिली सॉर्ट ऑफ रेफर दीज पेजेस। सो एक पेज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे नोशन पेज का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने हेडिंग डाली हुई है, फिर उस लिंक को भी डाला हुआ है जहां से मैंने इस रेफरेंस को लिया है, एंड देन मैं एग्जैक्ट उस कंपोनेंट का स्क्रीनशॉट डालता हूँ जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली है। सो दैट रियली हेल्प्स मी।
and you should check it out. Let me just put it in the chat. Zuddl.com/studio. इनफैक्ट हमारा प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपने अपना ईमेल अभी रजिस्टर कर लिया तो आप भी अपनी लाइव स्ट्रीम्स को इतना कूल बना सकते हो। 3 महीने का हम फ्री में दे रहे हैं। जो हमारे पास अभी रजिस्टर कर देगा Zuddl.com/studio पे जाके, उन्हें 3 महीने का Zuddl स्टूडियो फ्री में मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। आपकी लाइव स्ट्रीम ऐसे लगेगी कि एज अ किसी प्रोफेशनल पर्सन ने एडिट करी हो। मैं जितनी भी स्लाइड्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये सब Zuddl स्टूडियो से ही बन रही है। So yes, let's have a Q&A round. So what you can do is, you can put in your questions in the chat and I can start answering them. We'll spend around 5-10 minutes on the Q&A, and thoda sa ho sakta hai lag aaye, but we'll manage. Let's see how it works. So yes, let me bring the camera in the center. Oops, thoda sa teda ho gaya. But yes, what are your questions, guys? Let's have a questioning round. मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया है। Oh yes, Nishant. तो मोबाइल ऐप के लिए I would recommend you to check out Mobbbin.design. So Mobbbin.design is the only resource that I follow, and I will put the link in description. तो Mobbbin से you will have a lot of inspiration. तो अभी जितनी भी मैंने आपको इंस्पिरेशन बताई है, those are for marketing pages, not even web products. Web products के लिए there's a separate category altogether. ये specifically marketing design की इंस्पिरेशन के लिए है। तो मोबाइल ऐप के लिए Mobbbin is the best resource. Webflow की I don't have इतना ज़्यादा knowledge. Lap Ninja is a pretty good resource, but Lap Ninja is for learning. So that is what I use Lap Ninja for. Lap Ninja पे जाके I sort of find resource जिससे मैं Figma सीख सकता हूँ या Figma में और better हो सकता हूँ. Also, there are 42 people here. Just wanted to get a review of how the live stream looks like. Like, do you think that this live stream looks good? Like, because this is a use case that we're following for Zuddl Studio. Like, my main objective was just to show people how it looks. So it would be great if you can just put in some comments as to how the live stream looks on your end. क्या आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है? Does it look cool? All of your reviews are really appreciated. अगर मेरे पास BDES and BTech नहीं है तो मुझे बड़ी कंपनीज एज अ UX डिजाइनर लेगी? I think it's a very difficult question because big companies require you to have some form of education, and that is what I've noticed, right? So it's very important कि आपके पास कोई formal education हो या ना हो सकता है आप पे UX की डिग्री ना हो but BTech की कोई डिग्री हो, computer science की कोई डिग्री हो. So it really helps when you have some education. बड़ी companies में it is required that you understand how to talk, you understand systems, you understand how to communicate with people, and वो बिना college जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है, right? तो अगर आपने पढ़ाई करी हुई होती है, that college का experience sort of makes you prepared for life. But हाँ, मैं आपको सही बताऊँ, बहुत से self taught designers हैं जो खुद ही सीख रहे हैं, खुद ही jobs के लिए apply कर रहे हैं. So it's not a very big deal. Oh, thank you so much, Nishant. Thank you so much, Ritesh, Manav. All of these people are saying that the studio looks good, the live stream looks good. We've been working on this platform for a while. I feel very grateful that I am streaming on YouTube, teaching you about design on a platform that we have designed at Zuddl. So it's very meta. It was a big ambition of mine to actually show you something cool on something that I have contributed in. Yup, looks good. Just your face cam frame rate looks low, otherwise it looks cool. Oh yeah, I know, like it sort of looks laggy. It's probably because of my camera ka frame rate. I should do something about it. I have done BDES and graphic design but want a career in UX design. How could I start? Very easy. I mean, dude, इसी का तो मैंने कोर्स बनाया अपने YouTube चैनल पे. अभी भी अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, देविना, there's a 15 episode course, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. अगर आपने वो 15 वीडियोस कंप्लीट कर ली और उन वीडियोस में मैंने जो भी बोला उनको फॉलो कर लिया, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी रेडी टू गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप. उस इंटर्नशिप में आप मेहनत करके उस इंटर्नशिप को एक फुल टाइम ऑफर में कन्वर्ट कर सकते हो. Hi Anj bhaiya, I'm love with designing like posters, but when I go to YouTube for finding UX design, I get confused. Can you please guide me how to begin with UX? Swatantra, just check out the course. I have mentioned everything in thorough detail. आप मेरे YouTube channel पे जाओ, playlist पे जाओ, there's a course. Just start that.
I'm a product designer. How do I start with personal branding like you? Ritvik, you can just start putting your work on the internet. जैसे जैसे आप काम डालो कि लोग आपके काम को appreciate करें, कि आपकी branding बढ़ जाएगी. Just start putting yourself out there. Bro, without knowing the UX design, learning of UI design is worth it. No, you should actually balance both. What should you take into consideration while transforming websites for mobile? I think Shubhank, it's more about making sure कि आप कोई data को reduce नहीं कर रहे हो. It is easy to read. मोबाइल में real estate बहुत कम होता है, मोबाइल में data होता है, तो you can't have too many big images, too many videos as well. So just make sure that you have graceful degradation, and of course you have to follow references from all the websites that I mentioned. तो उसमें मोबाइल भी आपको दिख जाएगा. तो आप सारी वेबसाइट्स को फोन पे भी खोलना, अपने लैपटॉप पे भी खोलना, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेफ्ट एंड राइट पे रखना फिग्मा पे, एंड देन सी की हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. I graduated in BBA. Does it worth it? Any kind of education is worth it. Education never goes to waste. How long did it take for this product to come out? That's a secret question. What matters is that you have to sort of enjoy the product. So if you're liking the product, that is more important. Actually, I can make my video big as well. Let me make my video thoda sa bada so you can see me properly. Okay, what else is happening? Ansh bhaiya, how much salary can one expect if they have 0 to 1 year of experience? So I'll tell you how it works, right, Vivek. It is not about 0 to 1 years. It is about how good you are. अगर आपको फिग्मा में बेसिक सिस्टम्स बनाने आते हैं, अगर आपको रिसर्च करनी आती है, अगर आपको प्रोटोटाइपिंग आती है, फिग्मा के भी अंदर वेरिएंट्स पता है, कंपोनेंट्स पता है, स्टाइल्स एंड लाइब्रेरीज को डिक्लेयर करना आता है, प्रॉपर हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स बनाने आते हैं, और आपका विजुअल डिजाइन स्ट्रांग है, वेरी इजीली आपकी जो बिगिनिंग सैलरी होगी दैट वुड बी अराउंड 65 to 85,000 rupees per month. 65 to 85,000 rupees per month. This I'm talking about startups that are funded. अगर कोई startup funded नहीं होता, profitable नहीं होता, तो उनके लिए यही same salary afford करना बहुत मुश्किल हो जाता है. That is why you work with the right company. Hey Ansh, please share how to organize projects in professional manner, how to present it in front of stakeholders, clients. Kaushal, I will make more videos on this, but I think I have done quite a few of this wala topic in my course as well. In the last 4-5 videos, तो जो मेरी आखिरी 4-5 videos है, उस videos में मैंने बहुत clues दिए हुए हैं. How do I look for design mentor? Are you up for taking some mentees? You should not look for any design mentors. Absolutely not. Everything is there on the internet. You don't need any mentorship. I have 5 years of experience in sales, operations, and business development, hustling to start a SaaS-based company. I'm a learner right now. What should be my next move? I don't think I have enough awareness in this domain, so I can't really answer this. How to get internship in UX at Swiggy just like you did? They keep putting out job offers, like they keep putting out on their stories. On Instagram, you can follow Swiggy Design. So जब भी उनका कोई भी opening होता है, you will get to know instantly. Revit India, here to proclaim Panchmara supremacy. So Revit is by a friend of mine, Chaitanya. If you guys are interested in practical knowledge as to how you can grow quickly in life, you should check out Revit India. I'm learning with your channel. I'm also learning from Intern Shala. Is it worth it? Because I get some difficulty to understand because of language. Not sure, buddy. I have no clue about Intern Shala right now. Bro, can we get some info on portfolio? So Danshu, there's a proper long detailed video that I've made on UX portfolios. It's there on my YouTube channel. Just search for portfolios. Otherwise, check out whiteboard.fm. Whiteboard.fm की website पे जाके you will find a lot of interviews and case studies and proper portfolio reviews of people who have got into big companies. So वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी. What's the best habit which help you grow and learn efficiently? Documenting everything that I learned on Notion. Documenting everything that I learned on Notion. I'm telling you, Notion से आपकी life change हो जाएगी. तो अगर आप Notion जानते हो, अगर आप Notion पे सब कुछ document कर रहे हो, you can always go back to it. मैंने 2020 में Notion document करना शुरू करा था. इनफैक्ट अभी भी जो आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, उसमें मैंने जितनी भी रिसोर्सेज डाली हुई है, वो मुझे कहाँ से मिली? अपने Notion पेजेस से मिली. राइट, सो अभी भी मैंने आपको अपने नोशन पेज का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था. दिस इज माय नोशन पेज का एक छोटा सा स्निपेट. राइट, तो मैं जो भी सीखता हूँ नोशन पे आई डॉक्यूमेंटेड लाइक दिस. आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ द मिरर थिंग आई कीप कंफ्यूजिंग. सो या what will be the future of product design? No clue, dude. Nobody knows the future. क्या पता, अपना तो पता नहीं. UX design का क्या बताऊंगा मैं. Hi Ansh bhai, please suggest a video which explains UI UX project from start to finish. So Amol,
I have uploaded videos, but if you want to go into much detail, there's this person, Chetan Design Pilot. He has uploaded some really interesting videos. I just saw them recently. So I've been learning from his latest videos as well. You can check that out because he's done it in a pretty detailed manner. So you can see that. Um, how to practice UI the best way? Tanya, do the 100-day UI challenge. हर रोज एक UI पकड़ो, Mobbbin.design से, Behance से, Dribbble से उसको लेफ्ट पे रखो, Figma पे उसको ट्रेस करो. That is the easiest way. अगर आपने 100-150 screens को भी as it is trace कर लिया, you will have a pretty good time. Um, can you make a detailed video on auto layout? Oh yes, Hari, I want to make it, but I'm sort of just been like I'm making videos that are more towards design क्योंकि मुझे लगता है कि auto layout already बहुत लोग YouTube पे सिखा रहे हैं. तो मेरा मन ये करता है कि I should make content on videos जो इतना लोग नहीं कवर करते, राइट? तो YouTube पे आप जाके अभी भी auto layout पे बहुत सी चीजें देख सकते हो. But I want to make videos जो अभी भी थोड़ा सा underrated है. Can we make a portfolio website in Notion? Absolutely, Ritik. That is what I keep telling everyone. Ki rather than buying a domain, buying a template, just duplicate a template from Notion for free and put your work there. It is the easiest way. Okay, so guys, we are at the end of today's live. It is officially time for me to close, but I just need one favor from you folks. तो अभी मैं last frame लगाने वाला हूँ अभी. If you really enjoyed and if you really like my videos, oops, so I think my videos got shut. See, these things happen at the very end. Okay, yeah. So we are here right now. So if you really like this live, there are 66 people here. I would really appreciate if you could put up a story on Instagram just telling people कि आज का live stream कितना ज़्यादा cool था. This is happening live. Can you imagine? This is not edited. तो imagine आपका live stream कितना cool हो सकता है with Zuddl Studio, right? But of course, a lot of people will not use Zuddl Studio until unless you post about it. So I want you folks to go to Instagram, tag me on anshmehra.work, tag me and say that Zuddl Studios live streams are the best. I want you guys to help me. I can help you learn design, but you can help me get this product out there. This is the first time I am so vested into a product launch. So I am waiting. Okay, out of these 66 people, I'm gonna make a close note कि कौन मेरी help करने आ रहा है. I will be on Instagram. Make sure you tag me so that I can repost it. And see you next week. We will have live streams every single week where I will show you how Zuddl Studio looks like, because this is just the beginning. Zuddl Studio से live streams इतनी cool लगने वाली है that people are not going to believe it. So हम next Tuesday फिर से मिलेंगे around the same time, या तो 8:45 PM होगा या 9 PM होगा, and I will show you many cool things that you can have. Of course, we will talk about design, we will talk about inspiration, we'll talk about resources, opportunities, and so much more. So I will see you, and yeah, let's just end this live. See you everyone. Thank you.